Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing good. So for all those who are new here and are seeing it for the first time, let me introduce myself. I am Shruti, a teacher by profession and passion. Here for you all with the detailed explanation for physics lessons of 9th, 10th, 11th and 12th covering the CBSE syllabus. So this is my channel Physics for You. Yeah, that's right. Physics for you. Easy physics for you. I so hope and I wish that through my teachings I can make physics learning easy and enjoyable to you. So if you haven't yet subscribed to my channel, please subscribe and hit on the bell icon so that you do not miss any further notifications. You can also follow me on Instagram. You can also follow my blog. All the details are there in the description box. And also for my previous videos, the links will be available in the description box. Do check it out. I do advise you that if you are new and you haven't been following my channel, please watch it in a sequence. Watch it from the sequence. See the previous videos followed by the new videos. Then it will be very easy for you to understand. So before we start, let us quickly recap what all we have done till now. We studied about motion, then we discussed rest, then distance, displacement along with the differences and few NCERT problems. Then we discussed about speed, average speed, physical quantity, how do you derive the unit of any physical quantities. We also solved the numericals from your NCERT book. Then we studied about velocity, then what are scalar and vector quantities we discussed, after which we discussed the difference between speed and velocity. Then we had discussed about acceleration. After acceleration, we studied about retardation, that is also known as negative acceleration. Yes, after which we studied about uniform and non-uniform motion. Furthermore, we also discussed uniform and non-uniform speed and also uniform and non-uniform velocity. Alright, so if you haven't subscribed to the channel, kindly subscribe it. The link is there in the description box. And if you are an already existing subscriber but you missed out any of the video, the links are there. Kindly go and watch it. I would suggest you watch it in a sequence. Then it will be helpful for you. So let us proceed and learn a new topic, that is graphical representation of motion. Now when we talk about graphical representation, what does it mean? It means that to define anything pictorially. Okay, picture representation or pictorial representation of motion. For that, we need minimum two axes. Yes, so taking those two axes, you all are aware of it, x-axis and y-axis. Already in mathematics you have studied, isn't it? Yeah. So we are going to describe the motion in terms of x-axis and y-axis. We are going to represent it in a picture form, pictorial representation. Alright, now we are representing motion. So when we talk about motion, we know there will be some distance covered with respect to time. There will be some distance covered with respect to time. Now this type of distance covered with respect to time, when we want to show in respect to the graph or we want to show it graphically, pictorically, then there are two ways. One is distance time graph, another one is
velocity time graph. Okay, there are more, but for your syllabus you only need to know distance time graph and velocity time graph. Now you can see over here the word graph. When we talk about graph, minimum we require two quantities. To show anything in a graph, minimum you require two quantities. Okay, one is the dependent quantity and another one is independent quantity. ओके जब भी हमें ग्राफ में कुछ भी दिखाना होता है ग्राफ की मदद से, सो मिनिमम हमें दो क्वांटिटीज चाहिए होती है. वन इज डिपेंडेंट, अदर वन इज इंडिपेंडेंट. ओके, इन दोनों क्वांटिटीज को हम ग्राफ में दिखाते हैं. हाउ डू वी शो इट? वी शो इट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो हमारे पास कितने एक्सिस हैं? दो, एक्स एंड वाई. हाउ मेनी क्वांटिटीज? टू, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट. नाउ देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. ऐसा कोई रूल नहीं है कहीं पे भी. ओके, बट फॉर आर कन्वीनियंस, अपने सहूलियत के लिए हम जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, ओके, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हम एक्स एक्सिस में दिखाते हैं. वेयर डू वी शो द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी? ऑन द एक्स एक्सिस. एंड द डिपेंडेंट क्वांटिटी, जो दूसरी बची क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी? डिपेंडेंट. दैट क्वांटिटी वी शो ऑन द वाई एक्सिस. ओके, इट इज ओनली फॉर आवर कन्वीनियंस. आप इंटरचेंज करके भी दिखा सकते हो, बट फॉर आवर कन्वीनियंस हमने क्या कर लिया, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको एक्स एक्सिस में दिखाया, डिपेंडेंट क्वांटिटी को वाई एक्सिस में. ऑल राइट, सो रिमेंबर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स पिक्चर फॉर्मेट में दिखाना ग्राफ में. उसके लिए दो क्वांटिटीज चाहिए, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट. एक को एक्स में दिखाएंगे, एक को वाई में. ओके, नाउ सी डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब क्या है? यू नीड टू शो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. कितना डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हम किस में दिखाएंगे? ग्राफ में. ओके, नाउ सी, उसके लिए भी हमें दो क्वांटिटी चाहिए. हमने अभी पढ़ा डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. तो जो एक्स एक्सिस में एक को दिखाएंगे और एक को वाई एक्सिस में दिखाएंगे. ओके, नाउ जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है, वी हैव व्हाट? डिस्टेंस. ओके, और क्या है हमारे पास? टाइम. दो एक्सिस है एक्स एंड वाई. नाउ डिस्टेंस और टाइम में से कौन सी डिपेंडेंट क्वांटिटी है एंड कौन सी इंडिपेंडेंट? टाइम इज इंडिपेंडेंट. Time is independent. Time doesn't wait for anyone. Right? It will keep on moving. So time क्या हो गया? Independent quantity. Independent quantity को हम कहाँ दिखाते हैं? X axis. So on the X axis we will show time. Which is the other one left? Very good. It is the distance. So automatically distance कहाँ चला जाएगा? Y axis, because it is the dependent quantity, right? वो time पे dependent है. So when you will plot a graph, on X axis you will have time, on Y axis you will have distance. Okay. Now see the velocity time graph. What do you mean by this? इसमें हमें जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की उसको दिखाना है विथ टाइम. राइट, वी नीड टू शो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. नाउ फॉर दिस ऑल्सो वी हैव टू एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, बिकॉज वी हैव टू क्वांटिटीज, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, डिपेंडेंट क्वांटिटी. नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए दो क्वांटिटी कौन सी है? Velocity and time. Now out of velocity and time, again time is the independent quantity.
So we will show time on x-axis. Okay. And the other quantity, that is your velocity, it is your dependent quantity. So velocity we will show on y-axis. ओके देर इज नो रूल कि आपको एक्स एक्सिस पे टाइम ही लेना है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ही लेना है. यू कैन इंटरचेंज बट फॉर आर कन्वीनियंस जो भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, डोंट लर्न time on x-axis, distance on y-axis, time on x-axis, velocity on y-axis. Don't learn. Just understand out of the two quantities, whichever, जो भी independent quantity होगी, whichever will be the independent quantity, उसको आप x-axis में दिखाओगे and the other one goes to the y-axis. Alright? Keep this rule in mind and always follow it. It will be easy for you to plot graph. So that's all for today from my side. In the next video, we will discuss about the examples, different cases for distance time graph and velocity time graph. So thanks for watching. Like my video, subscribe to the channel and press the bell icon. See you in the next video. Bye bye.